औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हमारे सामने जजमेंट है अजमेर शाह वर्सेस आईजी फ्रंटियर कोर KPK। ये जो केस है ये 4862/2018 जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस ज़ियाउल हसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद साहब ने इस केस को सुना। इसमें जो असूल तय किया गया वो ये है कि डिले इन फाइलिंग डिपार्टमेंटल अपील, वेटिंग फॉर डिसीजन ऑन सर्विस अपील ऑफ कोलीग एम्प्लॉई इज़ नो ग्राउंड फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। कि आपने अपनी डिपार्टमेंटल अपील फ़ाइल करने में इसलिए देर कर दी कि आपके कोलीग की एक अपील पेंडिंग थी। आप ये इंतज़ार करते रहे कि पहले उसका फ़ैसला हो जाए फिर मैं अपनी अपील फ़ाइल करूं। इस दौरान जो आपका टाइम बार्ड हो गया है, आपकी अपील का मियाद समाअत गुज़र गया है, ये कोई ग्राउंड नहीं कि आपको उस पर कोई रिलीफ दिया जा सके। While hearing a petition of an employee of the Frontier Corps for leave to appeal, the court examined the correctness of the judgment of the Federal Service Tribunal whereby appeal of the petitioner had been dismissed, being time barred. The petitioner contended before the court that he was awaiting for the decision on the service appeal of his other colleagues, and after the judgment of the tribunal passed in favor of that colleague was upheld by the Supreme Court and implemented, he filed his departmental appeal. The court repelled this ground, pleaded to justify the delay and for condonation thereof with the observation, in our view, such could not have been a sufficient cause or a reason for the petitioner to file his departmental appeal after more than 4 years and 5 months. It seems that petitioner himself was not aggrieved of the order by which he was dismissed from service, and the assertion of the petitioner that he waited for the result of the service appeal of his colleague employee shows that the petitioner relied upon the grievance of his colleague employee and not of his own. तो जनाब हुआ ये, उसने कहा जनाब मैं तो इसलिए मुझे साढ़े चार साल लेट उसने अपील फाइल की डिपार्टमेंट की। वो उसने कहा जी मैं तो ये देखता रहा कि मेरे कोलीग का पहले फ़ैसला आ जाए। तो अदालत ने हेल्ड किया कि इसका मतलब ये था कि ये इसे चेक करना चाहता था कि इसका मतलब इसे कोई ग्रीवियंस नहीं था, ये बस वो देख रहा था कि उसके ग्रीवियंस का क्या बनता है। Had his colleague employee lost his case, that would have been the end of the matter and the petitioner would have not raised grievance against the order of his dismissal. The law does not leave choice to an employee to raise his grievance after his colleague is succeeded in the case. जनाब ये कोई बात नहीं जी, मेरा कोलीग अगर हो गया है कामयाब तो फिर मैं केस करूँगा। The employee has to raise his grievance immediately when cause to him has arisen and move so within the limitation period. अगर कोई ऐसी बात होती है तो फौरी तौर पर उसे अपना, जब काज ऑफ एक्शन बनती है तो फौरी तौर पर उसे अपना अपील कर देनी चाहिए। इसमें दूसरा एक असूल जो है तय किया गया है उसको हम अब देखते हैं। Principle of implied extension of the limitation period is not applicable where the appellate authority does not have the power of granting extension. The second ground agitated before the court was the departmental appeal of the petitioner has been decided on merits, and thus the limitation for filing of departmental appeal stood impliedly condoned by the appellate authority. The court rejected this ground also by holding that the power of extension of period for filing of a department appeal under order 14 of the Frontier Code Rule 1961 was vested in the authority against whose order the appeal is preferred, and no power of extension of a period for filing of a departmental appeal apparently seem is vested with the appellate authority under the scheme of law as laid down in the Frontier Courts Ordinance 1959 and the rules
made under it. Thus, we noticed that the principle of implied extension could not be passed in the present case. नहीं, अपने आप ही उन्होंने जो उनके पास एपलेट अथॉरिटी के पास अख्तियार ये नहीं था कि वो उसको एक्सटेंशन दे सकती, उसकी अपील में जो टाइम बार था उसको ख़त्म कर सकती। ये था जनाब हमारा केस लॉ जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।